We are live now. हेलो व्यूअर्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लिंकएक्स पर। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, हमारे चैनल पे आपको हर वो खबर और जानकारी मिलती है जो आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और हर वीक हम लोग फ्राइडे को आते हैं आपके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की क्लास लेके, मास्टर क्लास लेके, जहां पर हम अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, मार्केट में होने वाली हलचल की बात करते हैं। आज की फ्यूचर ऑप्शन मास्टर क्लास में हम एक और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे, कुछ जार्गन्स के बारे में जानेंगे। हमारी सेशन एक्सपर्ट मिस सोनी पटनायक, शी इज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डेरिवेटिव रिसर्च टीम ऑफ जेएम फाइनेंशियल। इनको 10 साल से ज्यादा अनुभव है इंडियन इक्विटी मार्केट में। दोस्तों, आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास सोनी पटनायक के साथ। सोनी, ओवर टू यू। Thank you, Abhishek, and welcome all our viewers. So today's webinar, again, we'll keep it very short, crisp, and to the point. So the topic of today's webinar is mechanics of option strategies. I know it may sound fancy, but exactly what we're trying to learn from today is those key parameters that affects or impacts an option price. And उसी parameters के दौरान how can we take a strategy, what kind of strategies should we take, and understanding कि these are those parameters जिसके वजह से हमारे options premium या option price जो होता है वो ऊपर नीचे क्यों होता है, and why is it that we keep on constantly losing out from options pricing, right? So let us understand what are those key important parameters that impacts an options price. So we'll start with the presentation. I hope it is visible to everybody, and I have just changed my slide. In case it is not visible, please point it out. So what I'm trying to tell you over here is the importance of Greeks. Greeks बहुत ही अहम चीज है एक options में, एक pricing उसका ऊपर नीचे price premium के लिए Greeks are very important. So what are those Greeks? Greeks का क्या importance है? How does it impact? So we have various type of Greeks. I have covered 5 basic understanding of Greeks. As you can see from the slide, the first Greek that we'll talk about is Vega. Vega, the symbol stands for K, although in Greek symbol iska kuch hai nahi, so it is usually represented by the symbol K. So Vega ka matlab hota hai, it is how sensitive it is to volatility in an options premium. It means कि जितना options premium हमारा ऊपर नीचे होता है, Vega उसका कैलकुलेशन या मेजर करता है how volatile it is, क्यों ऊपर नीचे होता है, कैसे होता है, that's how what Vega tells us. It is important or is it not important, और इन सारे Greeks में कौन सा वो 2-3 important Greeks रहेंगे which we should focus on while taking any strategy in options. So Vega is the first one that we can understand. It's very simple. It's all about for you to understand the options position, sensitivity to volatility. Your next Vega the next Greek that we'll cover over here is Delta. Delta is very, very important. Now, how it is important, why it is important, we'll cover in the future slides. But what exactly is Delta? Delta is simply a measurement of the speed at which the option price changes relative to the underlying asset or stock price. It means that delta, what it tries to tell you, if my underlying stock price, if my future price or my spot price of any stock is moving up or down, the price of the underlying future is moving up or down, according to that, if I have to measure my options, how much should it move up or down? That is calculated by something called delta. Delta is very, very important, and we'll understand what kind of strategies can be picked from delta. So we know that options के दो ही होते हैं, एक call option, एक put option. So call options will always have a positive delta, put options will always have a negative delta. भले ही ITM हो, ATM हो या OTM हो, it means that out of the money, in the money, at the money, any kind of moneyness of the option price. पुट ऑप्शंस में हमेशा सारे के सारे डेल्टा नेगेटिव होते हैं और कॉल्स ऑप्शंस में हमेशा पॉजिटिव होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं या फिर कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए. इट्स डज नॉट मीन दैट. इट मीन्स दैट डेल्टा इज गोइंग टू कैलकुलेट माय ऑप्शन प्रीमियम
only when my underlying price is changing. So that's what delta is all about. It's very important, and we'll see how important it is. The next Greek that we must understand is something called gamma. Gamma is nothing but just the second derivative of what delta is. अगर delta मेरा calculate कर रहा है कि स्टॉक फ्यूचर ऊपर नीचे 10 पॉइंट जा रहा है, तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम उस कैलकुलेशन या उस मेजरमेंट में कितना ऊपर नीचे होना चाहिए. So gamma is very close to understanding delta. So gamma is mostly like a second derivative. What it does is it has two ways of viewing. One is if it will tell you the acceleration of the option position relative to the underlying stock price, or it will tell you the odds of a change in the probability. So gamma will probably trying to tell you or give you a hint of that change in probability कि एक स्टॉक जो कि इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है या एट द मनी है, उसका कितना चांसेस है ऑफ एक्सपायरिंग इन द मनी. सो दैट्स व्हाट गामा ट्राइज टू टेल यू. मान लीजिए कि स्टॉक अगर 100 रुपए चल रही है, तो आपने 120 की कॉल ऑप्शन बाय की है, विच इज आइडियली आउट ऑफ द मनी. सो गामा कैलकुलेशन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि वो 120 कॉल ऑप्शन kitne easily it can become in the money. When it becomes in the money, you must understand that the stock should rally from 100 to more than 120. जब भी वो 120 के ऊपर ही जाएगा, then only we'll say that the 120 call option which was out of the money once upon a time becomes in the money. So this is what gamma helps us to understand. It calculates that for us. So gamma is mostly an early warning to the fact that your delta is about to change. Now delta for options, like I told you, is positive for call options. For example, I told you कि स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, आप 120 की कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं. So 120 कॉल ऑप्शन स्ट्राइक is obviously more than your 100 rupees of the stock. It means that this strike price is out of the money. So out of the money जो होता है वो कॉल ऑप्शंस के लिए डेल्टा थोड़ा कम होता है. जितना स्ट्राइक प्राइस दूर होते जाएगा फ्रॉम दी अंडरलाइन प्राइस, उतना आपका डेल्टा कम होते जाएगा फॉर आउट ऑफ द मनी. बट इन द मनी में जो है डेल्टा उतना भारी होते जाता है. अगर आप मान लीजिए कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपए चल रहा है एंड यू वांट टू बाय एन इन द मनी कॉल ऑप्शन ऑफ 90 स्ट्राइक प्राइस. सो 90 कॉल ऑप्शन इज इन द मनी फॉर यू, राइट? So 90 being in the money, डेल्टा उसका उतना भारी होता है. What it means भारी होता है कि अगर स्टॉक भी 1 रुपए चल रहा है, तो मेरा इतना ही मतलब इन द मनी, डीप इन द मनी जो है कॉल ऑप्शन, उसके प्रीमियम भी वैसे ही बढ़ेंगे जैसे मेरे स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं. सो दैट्स अ रीजन, जितना डीप इन द मनी होता है उतना डेल्टा भारी होता है. जितना डेल्टा भारी होता है, या फिर वी से दैट इट इज क्लोज टू 1, so premiums will move in accordance to the price movement shown in your underlying strikes, underlying asset. So futures में delta, सारे futures का delta 1 होता है. Options में ही it varies from 0.2 to 1 के बीच में it varies. जितना in the money होता है, जितना deep, it is that closer to being 1. The closest it is to being 1, the premiums will move in accordance to the future prices or the underlying prices. So that is how delta and gamma calculates that premium for you. It is very important to understand. That's a reason why we are focusing or emphasizing on the Greeks today, is because in today's market, you can see that your volatility, your VIX is not very, it's not very high. बहुत ही कम range में it is maintaining itself. It's in a range. एंड मार्केट्स में भले आपको मूवमेंट ऊपर नीचे को काफी देखने को मिल रहा है, बट इवन देन ऑल्सो योर प्रीमियम्स आर नॉट मूविंग एज सच. सो इन दोज केसेस मस्ट यू चूज एंड डीप इन द मनी और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी. डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, ऑफ कोर्स यू विल टेक दैट स्ट्रैटेजी, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कितना डीप इन द मनी ले रहे हो, उसका डेल्टा उतना ही पॉजिटिव, इतना भारी रहेगा, क्लोजर टू 1, सो इट विल मूव क्विकर when it comes to your futures movement. So that's what delta and gamma helps us to understand. Gamma se bhi zyada I would emphasize more on understanding delta, because delta is more important. Your fourth important Greek is to understand theta. Theta, simply put, as is called your time decay. It means कि आपने option खरीदी है and या फिर sell भी कर सकते हैं, but let us put just one simple example for us to understand. Let's say कि you have bought options. स्टॉक चल रही है 100 रुपए की, आपने 120 की कॉल ऑप्शन खरीदी है. सो व्हाट हैपेंस इज कि मे बी दी स्टॉक डज नॉट मूव
significantly as per your expectations. So what happens in that case? Obviously your 120 कॉल ऑप्शन जो आपने लिया है उसका प्रीमियम डीके होते जाएगा जितना नजदीक एक्सपायरी को आप आ रहे हो, that easily your premium starts to decay. So that's called theta. Theta is nothing but your options position sensitivity to time decay. As soon as you move closer to expiration or the monthly series expiry, theta वैसे वैसे बढ़ते जाता है. So you can see I have mentioned over here, the closer to the expiration date, the higher the theta. It means कि मान लीजिए कि for example कल expiry है. It's a hypothetical example. I know tomorrow is a Saturday, but we just trying to give you a very simple example. Let's say tomorrow is expiry and I have liked a stock which is quoting at 100 rupees. मुझे लगता है कि कल के कल ही stock 100 से 105 हो जाना चाहिए. So what I do is कि मैं 105 की call option buy कर लेती हूँ. I pay for example 2 rupees of premium. It's a hypothetical. So कल के date में अगर this particular stock does not move from 100 to 105 plus, मतलब 105 के ऊपर नहीं जाता है, ये जो 2 रुपए का मैंने प्रीमियम पे किया है उसका प्रीमियम it will start decaying because tomorrow being the expiry, the theta is very high. So if stock moves from 100 to let's say 107 tomorrow, 108, then this price of the 105 call option that I've taken, that will also move accordingly and give me profit. बट मान लीजिए कि अगर स्टॉक इज नॉट मूविंग एट ऑल और परहैप्स पहले 3 घंटे में ही कुछ भी मूवमेंट नहीं है स्टॉक में, वो 100 से 102, 101 और 102 के बीच में रह रहा है, देन व्हाट विल हैपन इज कि ये जो मैंने 2 रुपए पे किया है प्रीमियम, that will start decaying and perhaps I'll be left with maybe 1 rupee 0.8 paisa, something of that sort. So this is what theta tells you all about. So very important to understand. if आप बहुत ही मतलब एक्सपायरी के नजदीक हैं, so going for deep out of the money options will hurt your premiums because of the theta factor, right? So this is also very important. Combined with delta and theta, we'll understand how we can have some good option strategies. The last that Greek we have is called rho. It stands for the option position sensitivity to interest rates. So it's not very important for us to understand rho and how it can impact in option strategies, but rho is mostly used to calculate your option premiums. बेसिकली मतलब कि सारे के सारे जितने भी हमने ग्रीक्स यहाँ पे अभी सीखे हैं या फिर we've just understood a very layman language, इसमें से rho and vega I would say is the least important. It's not that it's not completely unimportant, but in comparison to the rest of the Greeks, I do believe that they have a lesser impact. So this is all about understanding Greeks in a very layman and simple language. It's not that कि आपको ये सारे definitions रटने हैं या फिर you'll have to remember it, but it's just a very basic understanding. Why is it important? We'll see it in the next slide. So I hope it has changed for you. So this is understanding delta. I have just put simply graphs because I don't want to complicate your level of understanding right now. The first graph that you can see is a basic long call delta. So let's give the same example again. Stock is quoting around 100 rupees and you are bullish on the stock. You're expecting कि 100 रुपए से 105, 108, 110 की तरफ जा सकता है. Now, if I buy a 105 call, it is still out of the money. Because the stock is at 100, I'm buying 105 calls, so it's out of the money. It means that my delta is lesser than 0.5 anytime because it's still out of the money. Just because I have a lot of experience, I can say that perhaps the 105 call ka jo hai delta, it would be positive 0.3 to 0.4 ke beech mein. So we'll keep it as 0.35, for example. Now let's say कि stock 1 रुपए move करता है, like from 100 it becomes 101. So how is this long call option that I have bought is going to help me? Because I told you that call options have a positive delta. So call option जो मैंने 105 का लिया है उसका delta I am assuming hypothetically would be 0.35 because it's out of the money. So if my stock moves by 1 rupee, 100 to 105, my 105 call option premium will move by 35 paisa. That's how the calculation is expected to happen.
So let's say अगर मैंने 100 का ही ऑप्शन लिया है, सॉरी 100 का स्टॉक प्राइस चल रहा है एंड आई पिक्ड अप 100 कॉल ऑप्शन, सो इट्स कंप्लीटली एट द मनी है, तो इट मींस दैट आई कैन एक्सपेक्ट द डेल्टा इज समवेयर अराउंड 0.4 to 0.5 के बीच में ही, perhaps it could be 0.45. So in that case, if the stock option is moving from 100 to 101, my option is going to move by 45 to 50 paisa instantly in that 1 rupee premium. This is how deltas are important. Jitna strike prices would be closer to my stock price or the underlying price that I say, डेल्टा उतना हैवी होता है. जितना दूर होते हैं स्ट्राइक प्राइसेस, जितना आउट ऑफ द मनी होता है, डेल्टा उतना ही वीक होता है, या फिर डेल्टा कम होता है. इट्स नॉट वीक, इट्स लाइक इट्स लेसर. सो दैट्स अ रीजन व्हाई when we pick deep out of the money, we have to wait for a significant amount, a measure of the stocks movement to be seen or be completely, मतलब उसको देखने के लिए we'll have to wait. That's the reason how the premiums move. Now, understanding the same thing for put option. Now, when we say put option, I have told you that it is a negative delta for put options. So 100 कोट कर रहा है स्टॉक प्राइस एंड आई फील दैट परहैप्स स्टॉक यहाँ से गिर सकता है. मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग 95 तक गिर जाए या फिर 92 तक गिर जाए. सो व्हाट आई डू इज दैट आई विल पिक अप अ पुट ऑप्शन बाय. I'll pay a premium for that. So I pick up 95 ka put option. Now, similarly, when I say 95, it means it is out of the money because stock price is quoting at 100. I'm expecting the stock to fall. So I'm picking up a 95 put option to buy. So being out of the money, iska bhi delta kahin 0.3, 0.35 ke beech mein rahega, something of that sort. But it's a negative delta because it is what you're expecting, because put options have negative delta. Now, if the stock falls by 1 rupee, from 100 it becomes 99. So you think negative delta matlab ki 35 paise girna chahiye because it's negative delta, but it is not exactly that way. The stock is falling -1 and you have your negative delta -0.35. In mathematics, we have understood and learned that minus and minus, it negates, it becomes a plus sign. So it means that your 95 put option will increase by 35 paisa. That's the reason why it has a negative delta. So this is how delta gets calculated. But ये तो मैंने आपको मतलब सिर्फ buying के side में कहा है. This also works similarly for selling of options. So when you sell options, you are expecting, when you sell call option, you obviously have a positive delta. How would you expect to gain out of that particular option premium? Is only when the stock will fall. So only when the stock falls, your call option premiums will decrease. But to what extent does it get decreased? That you have to multiply it with the delta of that strike price you've chosen. I can understand that a lot of people would be thinking कि हमको ये डेल्टा, गामा, बीगा, रो कहाँ से देखने को मिल सकता है. It is actually calculated by a very complicated formula from Black-Scholes formula. We don't have to calculate. I don't have to teach that to you. It is highly complicated, but it is easily available in any options calculator. You don't require fancy softwares. You just go and Google options calculator. आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे. You open the options calculator from your own choice, and all you have to do is just input a few details. Details जैसे कि stock का price आपको पूछा जाएगा, and the option that you are trying to pick, call option या put option, and the strike price. बस इतने ही details आपको enter करने हैं. The moment you enter these details, you will get all the Greeks readily calculated for you. Your delta, your gamma, your vega, your rho, your theta, everything gets calculated. तो आपको वहां से you can pick it up. आपको delta कितना आपको दिख रहा है, and you can calculate on your own. You just have to multiply it. So that's how delta helps to understand your options premium, and it will also help you to understand कि आपको expiry से कितना दूर हो आप, एंड आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टॉक मूवमेंट होने में, मतलब मूवमेंट आने में, ऊपर या नीचे, एंड अकॉर्डिंगली द प्राइसेस यू कैन कैलकुलेट द प्रीमियम मूवमेंट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. सो दिस इज बेसिकली डेल्टा. The next that we have to emphasize is your theta. Now, theta, like I've told you, is your time decay.
इट मीन्स कि जितना एक्सपायरी के नजदीक आप आ रहे हो आपका थीटा बढ़ते जाता है. इफ योर थीटा इज हाई, योर प्रीमियम डीके वुड बी ऑल्सो इक्वली हाई. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. If your expiration date is very far from your stock or your option that you've chosen, it means it would have a low theta or a lesser time decay value. It means it is being directly proportional. तो आप इसका मतलब कि premiums बहुत ही कम तरीके से जाएंगे. So you can see here in the graph, your x and y axis is showing you days till expiration. It means कि expiry तक कितने दिन बचे हैं, and your option time value on your y-axis. So you can see the slow time decay when you have a lot of days left with you before your expiration. And as soon as you are moving closer to your expiry, जैसे कि आप x-axis में you can see it is moving from 90 and you have 90 days to 60 days to 30 days. यहाँ पे जैसे आप move करते हो, so you can see, I hope my cursor is visible to everyone. So यहाँ पे जितना close या नजदीक आप आते हो to the expiry day, your time decay or your premium starts to decay at a very fast rate. So this is your entire options theta. So theta plus delta will help you to calculate which strike should you go for as per your view, whether you should sell, you should buy, what kind of strategies can you do. We'll look at a few examples with this. So this next slide tells us, I'm just trying to give you very, very easy understanding of option strategies using or combining delta and theta. So first are your delta neutral option strategies. So what's a delta neutral option strategy? It is nothing but you are taking multiple positions, maybe call and put options both combined. The reason why I have to combine call and put options for delta neutral is because all call options have positive delta, put options have negative delta. So plus or minus, as mathematics has have taught us, आप दोनों को combine करोगे तो ही जाके आपको एक neutral value मिलेगा, because it negates each other, the symbols. So that's how you choose for a delta neutral. So what you do is that when you have a stock, again hypothetical example, 100 रुपए की stock चल रही है, you can enter that with the help of an options calculator. आपने सारे prices inputs दे दिए हैं, जैसे कि stock का price क्या है, stock का आप कौन सा option ले रहे हो, call option या put option, and accordingly you are understanding कि मेरे अगर मैं call option लेती हूँ तो मेरा ये delta है, put option लेती हूँ तो ये delta है. So a lot of option sellers जो हमारे होते हैं या फिर option writers भी हम उनको बोलते हैं, those who like to play risk, जो जिनका risk appetite बहुत ज्यादा होता है, so they usually go for such kind of delta neutral. What we call is that they can sell options, deep out of the money options आप sell कर सकते हो, call or put, and you're expecting कि market उस range में रहेगा, but could be a little bit of volatile, ऊपर नीचे कर सकता है, but it remains in that particular range. Starting of an expiry, they sell deep out of the money call and put options, and they try to choose those strike prices जहाँ पे delta almost same है. अगर मैं 100 रुपए का stock चल रहा है and if I'm choosing to sell 110 call option at a particular premium, मेरा 110 का call option का जितना delta होगा, मुझे उसी delta को match करके I should pick up put option and sell that. The reason being is अगर मेरा positive delta और negative delta same आ रहा है call और put में, जितना stock price ऊपर नीचे होगा, both the premiums उसी similarity है, उसी ratio से they'll move. That's the reason why delta neutral strategies are quite famous. And there's one advantage to it now that the indices have introduced all those weekly expiries. It actually helps a lot to do a delta neutral strategies, but these kind of strategies are only for risk takers. They're highly risk, and it is suitable for only option writers. So if you're not a risk person, if you cannot take a lot of risk, probably the strategy is not best suited for you. This I'm only giving you on perspective of option selling. The reason is because my next I'm trying to also make you understand how the theta can help into this particular strategy. The reason why theta can help is because मान लीजिए कि आज Friday है
एंड निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगले हफ्ते की थर्सडे को आने वाली है एंड आई हैव अ वीकेंड ओवर. So what I can do is कि perhaps if I'm expecting the market will not move very volatile, wild movement नहीं देगा मंडे को, गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं करेगा एंड शायद शांत रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इसी इंडेक्स में आई कैन सेल फar deep out of the money, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों डेल्टा को मैच करते हुए ही ओनली आई डू दैट. एंड मंडे जब ओपन होगा इसके दोनों के कंबाइंड प्रीमियम और भी कम हो गए होंगे. हाउ डज दैट हैपन? बिकॉज ऑफ थीटा. बिकॉज फ्राइडे आज एक्सपायरी को टाइम है, मंडे और 2 दिन चले जाएंगे तो मेरा एक्सपायरी और थोड़ा कम, मतलब एक्सपायरी को मैं आई बी वेरी क्लोज टू द एक्सपायरी एंड माय प्रीमियम्स विल डीके, द रीजन बीइंग ऑफ बिकॉज ऑफ द थीटा. So it's called as a theta scalping, mostly where people take advantage of these sort of premium decays. It's called a theta scalping strategy. So it works well for weekly expiries, but both of these, if you are applying on the selling side of options, you must always remember that they have a lot of unlimited risk attached to it because you're selling options. And it is suitable for those who are risk takers, and strict stop loss definitely must be followed in such such strategies. This can also be applied to the buying side, of course. When you are buying options, call and put option both, you should buy options when you have of the similar delta. It means that आपको अगर लग रहा है कि 100 रुपए का स्टॉक मंडे को खुलते ही या तो 120 हो जाएगा या तो 80 हो जाएगा, you're expecting 20 rupees wild movement on either side. So what you do is, if you are expecting that side, though in that kind of movement, तो आप call option put option दोनों buy कर सकते हो. But कौन सा buy करना चाहिए, you can do it similarly. आप at the money भी उठा सकते हो, but अगर आप at the money उठा रहे हो तो by default आपके call और put option का delta same होगा. But अगर आप नहीं at the money उठा रहे हो, आप थोड़ा और कम premium pay करना चाहते हो, so you would definitely go for थोड़ा deep out of the money. Maybe you'll do a 105 call option buy, sorry, a 95 put option buy. In that case, you'll have to calculate the delta and see कि अगर मेरा 105 का call option delta positive is equal is negating the 95 put options negative delta. अगर it is negating like 0.5 or minus 0.5 है, then it's a good strategy. तो मैं दोनों buy कर सकती हूँ, and if the stock moves according to my direction, I would gain out of it. So these are the basic strategies, the importance of the Greeks that you must remember: delta and theta. Theta scalping, I've also explained, and a lot of brokers, they do give such strategies, but you must always understand your risk appetite before implementing any such strategy. And that's it for today. We'll just keep it to this Greeks. I hope you have understood these basics, and you can easily apply these Greeks the next time you are trading in options. Any questions? Nice, Soni. थैंक यू. आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे व्यूअर्स को बहुत डिटेल में और अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इन ग्रीक्स के बारे में. सो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं सोनी. सो आपने बोला कि सेलर्स के लिए इट इज ओके इफ दे होल्ड द पोजीशन फॉर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक. तो बायर्स के लिए भी कुछ ऐसा आपका ओपिनियन है, उनको रखना चाहिए? Definitely. जैसे कि मैंने आपको कहा है कि this strategy can work both ways, for buyers also, sellers also. I was trying to make it explain only from the seller's point of view, just because I wanted to highlight the risk associated. जैसे कि मैंने कहा है कि buyer's point of view में, if you're expecting wild movement can happen in the stock or indices, depends on how you want to trade. So similarly, आप उसको buying की तरफ भी कर सकते हो options, and दोनों call option put option का delta आप calculate कर सकते हो to understand कि अगर stock उसी direction में move करता है तो मुझे किस प्रीमियम या किस ऑप्शन से ज्यादा पैसे आएंगे. कॉल का ऑप्शन मुझे ज्यादा पैसा दे सकता है या पुट का ऑप्शन दे सकता है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर स्ट्रेटजीज. सो बोथ वेज वर्क्स क्वाइट वेल व्हेन यू अंडरस्टैंड डेल्टास. ओके. सो अनिकेत श्रीवास्तव इज आस्किंग, सो फॉर टाइम डिके के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? So time decay, like I said, you're expecting the premiums to decay over a period of time as soon as you come closer.
the best strategy would be to sell options, but understand that when you selling options बहुत ही risk उसका काफी high होता है, unlimited risk जुड़ा होता है. So if you're doing that, you should definitely also learn to hedge your positions. Maybe आप दोनों call put दोनों के side में भी आप sell कर सकते हो to take advantage of the time decay, and in case also there is any unexpected move coming in the option coming in the stock जो कि it can hurt your selling of options. So perhaps at least आप to some extent तो आपने दूसरा leg भी उसको sell किया है, so you can gain out of that, you can book and perhaps shift to lower prices, but that's a lot of strategy churning. So ideally for time decay, I would say theta scalping strategies work the best. ओके अंकित जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिला है. नेक्स्ट वुड बी बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें इन दिस सिचुएशन की जहां पर थीटा कम डिके हो, डेल्टा कम डिके हो, ऐसा कुछ इन द मनी, आउट ऑफ मनी, इफ यू कैन सजेस्ट. See, delta कम ऊपर ज्यादा होने का is not nothing to do with understanding कि कितना strike price best आप select कर सकते हो. It is mostly to do with theta. मान लीजिए कि आप expiry से बहुत दूर हैं, so in that case perhaps you would pick a deep out of the money ऑप्शन, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जितना एक्सपायरी से आप दूर होते हैं आपका थीटा उतना कम होता है. इट मींस कि प्रीमियम डीके होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं. आप जितना नजदीक हो एक्सपायरी के, आपके थीटा डीके मतलब प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि आपका थीटा बहुत ही हाई होता है. सो इन दैट केस इफ यू वेरी क्लोज टू द एक्सपायरी तो आप नजदीक वाला ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप दूर है बहुत एक्सपायरी से तो आप यू कैन गो फॉर डीप आउट ऑफ द मनी ऑल्सो. ओके, सो डेली ट्रेडिंग में क्या टाइम इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल कि मैं सुबह 9:15 बजे बाय करूं या 3 बजे बाय करूं? विल इट इम्पैक्ट? How it impacts is volatility. If you remember, we covered Vega as a first Greek, which gives you the how sensitive an options premium is, when it's compared to volatility. अगर आप सुबह 9 बजे या 9:30 बजे इनफैक्ट आप देख रहे हैं and volatile market है, बहुत ही ज्यादा volatile आपका ऊपर है and your VIX is quite high, आपकी implied volatility भी बहुत high है. जाते जाते अभी आप एक प्रीमियम आप देख रहे हैं, आपने मॉर्निंग में कुछ उसमें एक्शन लिया नहीं है, बट व्हाट कैन हैपन इज दैट एंड ऑफ द मार्केट में शायद वॉलेटिलिटी कम हो जाए, आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी घट जाए. सो इन दैट केस परहैप्स आपको सुबह जो प्रीमियम का एडवांटेज मिल रहा था वो आपको 3 बजे ना दिखने को मिले. सो दैट ऑल्सो इज अ फैक्टर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वीगा और वॉलेटिलिटी कैसे इम्पैक्ट करता है फॉर यू टू मतलब टेक अ पोजिशन वेदर इट हैज टू बी एट मॉर्निंग 9 o'clock और आफ्टरनून 3 o'clock. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस. अब कुछ नेक्स्ट वीक के लिए आपका कुछ टिप है, क्योंकि मार्केट आज आपने देखा है बहुत ऊपर नीचे किया है, बहुत डाउन क्लोजिंग दिया है, तो नेक्स्ट वीक आपको क्या लगता है? कुछ अगर व्यूअर्स के लिए हमारे आप कुछ टिप एडवाइस देना चाहें और कौन सी स्ट्रैटेजी वो यूज कर सकते हैं? So definitely, I think, we as a whole team, we keep on giving a lot of views on daily basis. हम Nifty, Bank Nifty, FinNifty तीनों indices को cover करते हैं, and you can follow the BlinkX, app also. वहाँ पे भी आपको दिखते हैं कि हमारे सारे views for the day पोस्ट होते हैं एंड किस ट्रेंड या फिर किस डायरेक्शन से वी आर गिविंग दी स्ट्रैटेजी. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू कि फॉर टुडे वी हैड गिवन अ फिनिफ्टी, हमको नीचे लग रहा था तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ कॉल ऑप्शन बिकॉज वो थोड़ा रिस्क हो जाता है, तो वी एडवाइज टू गो फॉर अ पुट ऑप्शन बाय. सो ऑब्वियसली मार्केट्स वीक ही लग रहे हैं एंड बिकॉज देयर इज अ वीकेंड कमिंग ओवर एंड ट्यूसडे को भी देयर इज अ हॉलीडे, सो मोस्ट लाइकली पीपल वुड बी एग्जिटिंग द पोजीशंस. पीपल वुड प्रेफर टू स्टे लाइट ओवर द वीकेंड एंड there's a holiday coming up, and understanding कि एक दिन holiday हो गया तो expiry को और एक दिन कम हो रहा है, so your premiums will decay even faster, at a faster rate than what it should have been in a normal week expiry. So markets थोड़े से weak तो लग रहे हैं. We do cover and you would see there are very key levels of Nifty, Bank Nifty जो कि ऊपर की तरफ it is not it's not sustaining in that high levels.
So you can perhaps be cautious when you are taking any positions even over the next weekend, and wait for the proper levels that we keep on mentioning. Nifty ho agar to 19,600 19,700 ke liye you'll have to wait for that complete confidence to come back to the bulls. Bank Nifty 45,000 के ऊपर उसको sustain करना पड़ेगा. So you'll have to watch out for these levels. जब तक नहीं होता है, so try to remain cautious over the next week expiry as well. Nice. Okay. Thank you. Thank you, viewers. Thank you, Soni, for taking out time for today's session and sharing some very important insights. Viewers, thank you for joining us today. I hope आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा. मार्केट से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए. Thank you, everyone. Thank you, viewers.